नमस्कार। आप देख रहे हैं आज का सौदा मनी 9 पर। मैं हूं साक्षी बत्रा। इस खास शो में हम आपको बताते हैं मार्केट्स की कैसे हुई है शुरुआत और आज के ट्रेडिंग सेशन में कहां पर मिल सकते हैं आपको मुनाफा कमाने के मौके भी। हमारे साथ आज के खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मेहुल कोठारी आनंद राठी से हमारे साथ आज के एक्सपर्ट हैं, जो कि सबसे पहले हमारे साथ ये शेयर करेंगे कि आज की मार्केट्स में जो जोरदार गिरावट के साथ शुरुआत हुई है, ऐसे में इन्वेस्टर्स की रणनीति क्या होनी चाहिए। गुड मॉर्निंग मेहुल, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन। It's been a sharp decline that we have seen in the markets right in the opening levels. 1,000 points cut for the Sensex. 14,500 has also been breached on the downside for the Nifty 50 as well. Sharp decline, overall broad-based sell-off even in the broader markets. The Nifty Bank falling almost 4% in trade. First up, help us understand what are the reasons because of which we have seen this sharp fall in the markets. Will this get even deeper as we go ahead, or will there be some kind of recovery? What are you noticing on the charts? Good morning, Sakshi. First of all, let's talk about the reason for the same, why this fall has happened. Actually, during the previous week on Monday itself, there was a fall of 450 points when we were on the show. So what has happened is, see, markets. First of all, markets don't like uncertainty. Currently, there are lots of uncertainties in the market. The number of cases are rising, and whether the lockdown will happen or not. Because the only concern is right now that will the economy will again be on the standstill like it was there from March 2020. So that is the only concern market has. Because the number of cases are rising, that is fine because it's already a challenge for our market. But there are no specific triggers which market is getting, whether to rise from here or whether to crack from here. Otherwise, if COVID would have been issue, we could have seen a crack of 10% from here on. But Yeah. that is not the case right now. So what is happening? Markets are not able to sustain at higher levels because of the rising case and COVID. And at the same time, markets are not sure whether to crack from here or not. So it's a range-bound market. The broader range is 14,200 to 15,000 levels. Earlier, we used to talk about 14,900, which was taken out, but markets didn't close above that. So currently, 15,000 and 14,200 is a broader range for the markets. Hmm. एब्सोल्युटली। निफ्टी बैंक के बारे में आप क्या कहेंगे? सबसे ज्यादा पिंच यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर आप पीएसयू बैंकिंग के फॉल को देखेंगे, 6-7% तक के इंडेक्स में फॉल देखने को मिल रहा है। फाइनेंशियल सर्विसेज में काफी ज्यादा क्रैक देखने को मिल रहा है। तो ये जो सेक्टर्स हैं जिन्होंने डेफिनेटली अभी राइज ऑफ द रैली में सपोर्ट किया था, आज वहीं पर सबसे ज्यादा क्रैक देखने को मिल रहा है। कुछ ऐसे चुनिंदा स्टॉक्स जहां पर सबसे ज्यादा एनालिस्ट बुलिश थे, जैसे एसबीआई, इन स्टॉक्स में काफी भारी गिरावट देखने को मिल रही है। अभी आप राय क्या देंगे यहाँ पर? क्या ऐसे मौके को खरीदने के लिए यूज कर लेना चाहिए इन्वेस्टर्स को अभी कुछ ऐसे चुनिंदा स्टॉक्स में जहां पर हमने देखा है अच्छी रिकवरी है, स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट है, क्वालिटी नेम्स है और टेक्निकल चार्ट्स भी सपोर्ट करते हैं? See, first of all, let me confess that we were big time wrong on Bank Nifty. Bank Nifty, we have been bullish since last 15 days, and what has happened is, see, there were many pretty shorts in the system for Bank Nifty, and we were hoping that there will be a short coming recovery in Bank Nifty because Nifty was not giving up. But unfortunately, what has happened that short has played their role, and Bank Nifty has cracked down. It has broken the support of 32,000. So I guess some more downside is left for Bank Nifty. Now, with regards to stocks which you talked, that SBI and other private names, I guess see, it's a time that currently one can go long, but one need to accumulate it. Not this is not the exact level, but we cannot predict the bottom from here. So one need to accumulate quality stocks in banks like we have Bank of Baroda is there, SBI is there in PSU space. If you talk about private space, then I would go for HDFC Bank and Kotak Bank. One can accumulate those kind of stocks. And overall, if you talk about markets, then I feel that now it's the time. See, pharma we already covered, FMCG we already covered on the show. Now we feel that the theme will be going after 15 days. Maybe it will take a bit longer time, but the next theme from here on will be unlock down theme. The stocks which we are not which are not doing good because of this lockdown, that is entertainment industry ले लो आप, hospitality ले लो, या hotel industry ले लो. There are so many stocks like railways company हो गई, PDR है, that is entertainment हो गया, retail sector हो गया. So ये सारे stocks which are under pressure due to this lockdown or COVID situation,
यहाँ पर एक बाइंग आ सकती है आफ्टर 15-20 days, बिकॉज सी व्हेन थिंग्स विल स्टार्ट गेटिंग बेटर एंड बेटर, उससे पहले पहले स्टॉक्स बॉटम बनाते हैं या फिर मार्केट बॉटम बनाता है, उसके बाद कभी नहीं होता, बिकॉज एवरीथिंग हैपन्स previously in the market, और वहां उसके बाद कोई ट्रिगर आता है. So we feel that one should focus on such kind of stocks. डेफिनेटली बिफोर कमिंग टू योर स्टॉक रिकमेंडेशंस फॉर द डे, इस तरीके की गिरावट में जहां पर आप खरीदारी के मौके देख रहे हैं और इन्वेस्टर्स भी यही ढूंढ रहे होंगे, लेकिन उससे पहले जो इन्वेस्टर्स इस स्थिति में थोड़ा पैनिक में आ जाते हैं कि शार्प 1000 पॉइंट्स का गिरावट हो चुकी है सेंसेक्स में और जोरदार गिरावट अभी और भी देखने को मिल सकती है क्योंकि कोविड के केसेस तो लगातार हर दिन बढ़ ही रहे हैं, तो जिस जिस तरीके से हमें नीजक रिएक्शन मिलता रहेगा, तो ऐसे में कुछ इन्वेस्टर्स पैनिक में आके अपने जो प्रॉफिटेबल शेयर्स है वो बेचना चाहते हैं और लॉसेस में भी बुक कर लेते हैं स्टॉक्स। उन लोगों के लिए आपका सजेशन क्या रहेगा, एडवाइस क्या रहेगी, आज की स्थिति को किस तरीके से देखना चाहिए? See, this is part and partial. This keeps on happening in the market, but at the same time, investors need to uh, address this issue on its own. कि यहाँ पर पिछले साल हमने ये सारी सिचुएशन देखी है, ऐसा नहीं है कि नहीं, ये चीज नहीं है, और हर बार मार्केट्स में होते रहता है. देयर आर सम और द अदर ट्रिगर्स फॉर द मार्केट टू गो आइदर अप और टू क्रैक लाइक दिस. So at the same time, investors or traders should understand they should always remain hedge. जब भी मार्केट्स ऑल टाइम हाई के करीब हो, यू शुड ऑलवेज रिमेन हेज. जब भी अनसर्टेनिटी हो, यू शुड ऑलवेज रिमेन हेज. सी, मिड कैप एंड स्मॉल कैप को हम हेज नहीं कर सकते, दैट इज फाइन, बट एटलीस्ट जो फ्रंट लाइनर्स हैं उनको हम कॉल सेलिंग, कॉल राइटिंग करके या पुट खरीद कर या फिर निफ्टी के पुट्स खरीद कर हम हेज कर सकते हैं. एटलीस्ट ये चीज कर सकते हैं. और दूसरी सलाह ये है कि जो हमने इससे पहले भी व्हेन वी स्टार्टेड दिस शो, वो हमने पहले कहा था कि पोजीशन साइजिंग इज द की. यहाँ पर जो अगर ज्यादा स्ट्रेस होगा तो मिड कैप एंड स्मॉल कैप में ज्यादा स्ट्रेस होता है कभी भी, बिकॉज रैली भी उनमें उसी तरह की आती है. तो यहाँ पर अगर ओवर लेवरेज नहीं है, पोजीशन साइजिंग ठीक है, तो आई डोंट थिंक सो वन नीड टू वरी, बिकॉज अगर क्वालिटी स्टॉक्स है तो अनलेस एंड अनटिल मार्केट में अगर कंपनी में कुछ खराब हो जाता है तो बात अलग है, वरना फिर से वो रेट्स आते हैं जैसा हमने देखा 2020 में जो फॉल है उसके बाद where we are trading right now. So one needs to uh, look at their position sizing. At the same time, one needs to remain hedge. अगर FO stocks में long हो तो वो तो खास करके hedge होना ही चाहिए. Because the stocks like you see the stocks like I'm watching the screen, stocks like BLF और न जाने कितने कितने stocks are were down by more than 8 to 9%, और उनके lot sizes आप देखिए 2000 3000 lot sizes, lot values are 7 lakhs 8 lakhs. तो यहाँ पर अगर एक ही दिन में 10% की फॉल होती है, 70,000 80,000 M2M फॉर वन लॉट. सो बेटर टू हेज सच काइंड ऑफ ट्रेड. दैट इज माय ओनली एडवाइस फ्रॉम मी. ओके, लेट्स गो ऑन टू योर स्टॉक रिकमेंडेशंस। आज की इस गिरावट वाले बाजार में भी अगर कहीं मौके ढूंढने हो तो कौन से ऐसे स्टॉक्स होंगे जहां पर निवेश करके अच्छा रिटर्न लॉन्ग टर्म के लिए या फिर पोजिशनल ट्रेड्स के हिसाब से देखने को मिल सकता है? सी साक्षी, एज वी डिस्कस्ड प्रीवियसली कि हमें मिड कैप 100 में एक गोल्डन क्रॉसओवर देखने मिला है, सो वी आर मच मोर कीन टुवर्ड्स मिड कैप स्टॉक्स ये फॉल में. एट द सेम टाइम द थिंग व्हिच वी डिस्कस्ड राइट नाउ कि अनलॉकडाउन थीम पर हमें काम करना चाहिए. तो आवर फर्स्ट स्टॉक is from that theme only. I guess once COVID is settled down, so IRCTC will be the stock which could rally very faster. So my first stock is IRCTC. Currently it's quoting near to 1750 odd levels or 1730 levels. My stop loss is 1550 and target is 2000 for IRCTC. यहाँ से उसमें almost 10 to 15% की upside देखने को मिल सकती है. 10 to 15% in the railway major IRCTC can be seen. Okay, the other stock would be which one and from which sector? It's the same sector, that is unlock. It's a retail sector, but theme will be that unlock down only. So Trent is the another stock which we are liking. Trent को लोग buy कर सकते हैं. It's trading somewhere near to its 200 day moving average, so एक strong support भी है. काफी अच्छा खासा correction हमें ऊपर से देखने मिला है. So I guess the risk reward is very favorable for Trent. One can go long in Trent with a stop loss of 650 and upside target will be 830 from here on. Okay. Trend is the other stock from the retail space which investors can look to buy, and which will be your last stock for today's recommendation? For the last stock, I would like to go for banking name. That is private bank. I'm liking Kotak Bank
Obviously, some crucial supports were there which were broken in today's session. But I guess still it's a lucrative buy from here on. यहाँ पर एक शार्प बाउंस हमें देखने को मिल सकता है. ये भी इसका भी टारगेट 2000 तक के करीब का हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में. एंड स्टॉप लॉस फॉर द सेम विल बी 1650. सी ऑल दिस बैट्स आर लुकिंग एट द करंट सिनेरियो. थोड़ा रिस्की बैट्स हो सकते हैं, बट रिस्क रिवॉर्ड काफी ज्यादा अच्छा है. आई वुड सजेस्ट ट्रेडर्स के स्मॉल क्वांटिटी में ये सारे ट्रेड्स कीजिए. एग्रेसिव जाने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज स्टिल वी आर नॉट आउट ऑफ द वूड्स एंड थिंग्स आर नॉट क्लियर. सो यहाँ पर एक छोटे छोटे क्वांटिटी में ये तीनों स्टॉक्स में ट्रेड कर सकते हैं. Okay, thank you very much, Mehul, for sharing these updates with us and sharing an outlook on the markets when the investors are really facing a tough day on the markets today. Thank you very much. With that, we wrap up this edition. A whole lot of coverage on the markets and to understand how do you deal with the situation in the markets currently, which is currently quite falling right now with respect to the benchmark indices, mid caps, the small caps, and clearly Mehul has articulated that hedging your positions is extremely important on such days for especially intraday traders. But for long-term investors, for sure, remaining with the quality names and adding and accumulating quality names can also help in garnering good returns over the long term as well. We'll continue to give you all the updates of how the markets are trading and what should you be doing with all the expert advice. So stay with us on Money9.com.